Hello everyone, this is Professor Sachin Jain and I'm going to discuss the NEET 2023 chemistry paper. So, starting with the analysis of the chemistry paper of NEET 2023. So, overall, physical chemistry had 18 questions, out of which 17 were quite easy. One question was a bit calculative, but it was formula based. So, overall physical chemistry section was easy and it was a higher weightage in comparison to the organic and inorganic chemistry. Organic chemistry had 17 questions and the level of organic chemistry was moderate. Few questions were good, I won't say tough, but they were at a good level. And as compared to NEET 2022, this chemistry section was comparatively good, meaning it was at a better level. And inorganic chemistry had 15 questions, and many of the questions were fact based, and there were quite a few questions of assertion and reason. And statement one, statement two type of questions were also there. So, overall, the difficulty level, I will say, is moderate for this year's NEET 2023 paper. Let's start with the solutions to the questions. First one, Talking, sorry, taking stability as the factor, which one of the following represents correct relationship? First observation, these are the elements related to the group number 13, which is the boron family. And if you observe, they are asking about the correct stability relationship, and it is with regards to the oxidation state. Now, for a particular group, the higher oxidation state is stable for the smaller elements, and the smaller oxidation state is stable for heavier elements. तो शॉर्टकट ट्रिक ये होता है कि छोटे एलिमेंट के लिए बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहता है एंड बड़े एलिमेंट्स के लिए छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद अ वेरी फेमस इफेक्ट कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. So if I talk about the group 13 elements, it is boron, aluminium, gallium, indium, thallium. To be remembered as Bal Gangadhar Indian Tilak. तो अगर हम थैलियम की बात करें तो थैलियम में द प्लस वन इज मोर स्टेबल देन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड बोरॉन या फिर अल्यूमिनियम की बात करें तो ये छोटे एलिमेंट्स है, उनका बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्लस थ्री इज मोर स्टेबल. So if we look at the option 1, thallium in the plus 1 is more stable than thallium in the plus 3. Of course, this is our answer. So the answer is option 1, reason inert pair effect. Next, identify the product in the following reaction. Organic का बहुत ही famous conversion related to the diazonium chlorides. So we have the benzene diazonium chloride and it is treated with Cu2Br2 and HBr. This is the famous Sandmeyer's reaction. So Sandmeyer's reaction क्या करता है? The diazonium is converted into the bromobenzene. Then the bromobenzene is added with Mg ether. This is the preparation of Grignard reagent. तो यहाँ बन जाएगा Grignard. And Grignard with water gives you the corresponding hydrocarbon. जनरल रिएक्शन ये है कि RMgBr in contact with water. So the famous reason is Grignard is a source of carbon ion, and the moment it comes in contact with any H containing compound, यानी प्रोटॉन के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो वाटर हो, एसिड हो, कोई भी कंपाउंड हो, the R minus grabs the H plus and forms the corresponding hydrocarbon. So if this R is a phenyl group C6H5, of course the product over here is going to be benzene. Just C6H6, which is benzene. Answer is option 3. A very simple conversion based question. 53rd, the given compound is an example of, हमें type of halide find करना है. तो famously यहाँ पर halide के type find करने के लिए 5 types मैं हमेशा बताता हूँ, which is to be remembered as BAWA, that is benzylic, allylic, alkyl, vinyl and aryl halides. ठीक है, ये 3 बार जो है वो CsP3
हैलाइड होते हैं और ये CsP2X हैलाइड होते हैं। एंड बेंजाइल अलाइल अल्काइल में द ओनली डिफरेंस इज द नेबरिंग और द एडजेसेंट कार्बन। तो इन सब में sp3 कार्बन के एडजेसेंट में जो नेबरिंग कार्बन है वो अलग होता है। जैसे बेंजाइलिक में इट इज द बेंजीन रिंग, अलाइलिक में डबल बॉन्डेड कार्बन ओपन चेन, एंड अल्काइल में अगेन sp3 कार्बन ही होना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व करो तो स्ट्रक्चर में द हैलाइड इज फर्स्ट अटैच टू द sp3 कार्बन, यानी आंसर आपका बा से आएगा। एंड नेबरिंग में देयर इज अ डबल बॉन्डेड कार्बन एंड दैट रिफर्स टू योर allylic halide। so this is a secondary allylic halide। ऑप्शन में allylic halide है, आंसर इज ऑप्शन 4। वेरी सिंपल स्कोरिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट फ्रॉम द POC, principles of organic chemistry. In Lascine's extract of an organic compound, both nitrogen and sulfur are present, which gives blood red color with ferric ion due to the formation of course, it is ferric thiocyanate, which is FeSCN2 plus, because इसका +3 charge रहता है, इसका -1. Overall complex will have a 2 plus, and this is the famous blood red coloration compound. Next. Given below are two statements. One is assertion reason. So assertion reason वाला question है. A reaction can have zero activation energy. Bullshit. कोई भी reaction में zero activation energy अगर रहेगा तो reaction आगे बढ़ेगा ही नहीं. Reaction won't happen only. So obviously this assertion as a statement is definitely incorrect. Next, reason. The minimum extra amount of energy absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. Absolutely correct. Why? Because if we look at the graph of potential energy versus the progress of the reaction, then for any reaction, the reactant molecules have initial amount of stored energy, which is their potential energy. Potential energy reactants का होता है. जैसे ही reaction initiate होता है, this energy gets converted into kinetic energy and it will keep on increasing till it reaches a transition state. And from the transition state, it forms the product, and assuming that it is an exothermic reaction, final product energy कम हो जाएगा as compared to reactants. So this is your reactant, this is product. From reactant to the transition state, this is your activation energy. So the overall energy of the activation and the potential energy is called as the threshold energy. इसको पूरे को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आप स्टेटमेंट देखो, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy. Reactant को ये जो minimum energy लगती है for reaching the transition state or the threshold value is obviously the activation energy. यानी assertion true है, सॉरी assertion false है, रीजन ट्रू है, आंसर इज ऑप्शन 1। काइनेटिक एनर्जी का काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बट थोड़ा सा एनालिटिकली आपको आंसर करना है इसको। 56, the right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is. So the famous reaction of decomposition of CaCO3, that is calcium carbonate, which at 1200 Kelvin gives you quicklime and CO2. अब यहाँ पर इसका 20 ग्राम है बट प्योरिटी सिर्फ 20% है, मतलब द एक्चुअल अमाउंट ऑफ CaCO3 इज ओनली 4 ग्राम्स। अब पूछा है CO2 का मास कितना रहेगा, तो 4 ग्राम के हिसाब से इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, and that will be 4 divided by CaCO3 is famously 100 molar mass, so ये 0.04 moles होगा। Now from the reaction 1 mole of CaCO3 gives you 1 mole of CO2, तो सामने भी 0.04 मोल CO2 बनेगा। अब मास पूछा है तो मल्टीप्लाई कर लो इसका मोलर मास which is famously 44 grams and you get the answer as 1.76 grams.
सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, आंसर इज 3. Next, again coming from organic, chapter aldehyde ketones. You have a ketone reacted with HCN, and we know that it gives you a cyanohydrine with OH and cyano on the same carbon, followed by the heating with concentrated H2SO4. तो साइनो ग्रुप जो रहता है उसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस अगर हो, then it converts to the carboxylic acid. Cyanide ka hydrolysis gives you acid and cyanide का reduction gives you a primary amine. तो हमेशा मैं बोलता हूँ ना, साइनाइड का HR रिएक्शंस याद रखो, हाइड्रोलिसिस एसिड देता है, रिडक्शन प्राइमरी अमाइन देता है. दिस साइनो विल चेंज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड. बट वन मोर ऑब्जर्वेशन, आपके पास यहाँ पर हीट भी दिया है. Now heating always refers to the elimination reaction, और अल्कोहल है मतलब द एलिमिनेशन फॉलोड विल बी द इवन मैकेनिज्म. तो यहाँ पर एलिमिनेशन बाय इवन मैकेनिज्म के हिसाब से जिस कार्बन का OH एंड कोई भी बाजू वाला कार्बन का H भी निकलेगा, एंड देयर विल बी एन अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच विल बी प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पर दो रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं, एक तो साइनो से COH और हीट की वजह से एलिमिनेशन भी होगा. That's why we have an unsaturated carboxylic acid formed in the final product, which is the product C. Now, statement-based questions. A unit formed by the attachment of the base to one dash position of sugar is known as nucleoside. Of course, DNA RNA में जो न्यूक्लियोटाइड होता है, that is a combination of nucleoside plus the phosphate group. तो यहाँ पर हमेशा BSP वाला सीक्वेंस ध्यान रखना है, बेस, शुगर और फॉस्फेट, यानी BSP, बेस शुगर फॉस्फेट. बेस जो है वो शुगर के वन डैश पोजीशन पे रखता है, और फॉस्फेट जो है वो शुगर के 5 डैश पोजीशन पे लगता है. ठीक है, बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और ये पूरे BSP को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. So look at the statement. A unit formed by the attachment of base to one dash position of sugar is known as nucleoside. Absolutely correct. And when nucleoside is linked to phosphorus acid as 5' position of sugar moiety, we get a nucleotide. Yes, as I have explained, nucleoside is base sugar and nucleotide is base sugar phosphate. Yani nucleoside plus phosphate at the 5' position of sugar gives you nucleotide. So both the statements are absolutely correct. Answer is option 2. And this question is from biomolecules. तो इस साल हर चैप्टर को वेटेज ऑलमोस्ट बराबर का दिया गया है, एंड वी कैन कंसिडर दैट ऑल द चैप्टर्स वर बैलेंस्ड एंड दे वर कवर्ड इन अ प्रॉपर मैनर. So overall it was definitely a good paper. 59th, a compound is formed by two elements A and B. The element form B forms cubic closed packed structure, and atoms of A occupy one third of TV and tetrahedral voids. The formula of the compound is AXBY and the value of X plus Y is in option. बहुत सिंपल सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं हमेशा बताता हूँ. ए स्टेटमेंट जो दिया है बस उसको रीड करो. ए ऑक्यूपाई वन थर्ड ऑफ टीवी. अब बी जो है वो CCP वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, यानी उसके नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं n कंसिडर करूं तो टीवीज होते हैं डबल 2n एंड ओवीज होते हैं उतने ही. ठीक है, तो दिस 2n कैन बी कंसिडर्ड टू बी 2b एंड n कैन बी कंसिडर्ड एज b. ठीक है, तो ए ऑक्यूपाई कर रहा है वन थर्ड ऑफ टीवी विच इज ट्वाइस ऑफ बी. देयरफॉर A is to B का रेशियो हो जाएगा 2:3, यानी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा A2 B3, यानी X2 है Y3 है, X plus Y is equal to 2 plus 3 which is equal to 5. Answer is option 2. बच्चे जैसा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का. 60th,
The stability of Cu2 plus is more than Cu plus, यानी cupric is more stable than cuprous in aqueous solution due to डी ब्लॉक एलिमेंट्स का फेमस एक्सेप्शन बोल सकते हो, बिकॉज अगर कॉपर की हम बात करें तो इसमें एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1 का। थियोरेटिकली कॉपर प्लस वन आर्गन 3d10 देगा, which has a completely filled D configuration versus cupric argon 3d9 दे रहा है, जो कि रिलेटिवली कम स्टेबल होना चाहिए। बट ये देखा गया है कि एक्वियस सोल्यूशन में कॉपर का 2 प्लस यानी क्यूप्रिक ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली एक्वियस सोल्यूशन में इसका स्टेबिलिटी का रीजन है हाइड्रेशन एनर्जी। So it's a famous exception with a famous reason from the D block elements. The answer is hydration energy option 4. Next one, लिस्ट को मैच करना है और बहुत सिंपल सा मैच है यहाँ पर। हो ना, ऑप्शन अगर देखेंगे, कार्बन sp3 यूज्ड एज लुब्रिकेंट रिड्यूसिंग एजेंट एच लाइक मॉलिक्यूल्स, और वन में डायमंड फुलरीन और ग्रेफाइट है अपार्ट फ्रॉम कोक। So coke or carbon is famously a very good reducing agent as we all study in metallurgy. Diamond famously has a tetrahedral structure with each carbon sp3 hybridized. Fullerene soccer ball structure होता है, 5 और 6 membered rings होते हैं, तो cage like structure. And graphite, because of the sheet or layer like structure, it is used as a lubricant. So A is matching with third, A का थर्ड यानी ऑप्शन 2 और 4 तो रूल्ड आउट है। फिर बी का वन फोर्थ में मैच हो रहा है। तो अगर आपको दो ऑप्शन भी मैच हो जाते हैं और आपको पता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, यू कुड हैव क्रैक्ड दिस क्वेश्चन क्वाइट इजीली। ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल पी ब्लॉक एलिमेंट का फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन वाला है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus. यस, डाइविंग के टाइम पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वो ज्यादा सोल्यूबल होने की वजह से इट कैन कॉज बेंड्स, अ डिजीज कॉल्ड बेंड्स। तो हीलियम को यूज करते हैं डाइविंग के टाइम पे। तो हीलियम यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus. यस, of course it's correct. हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, नॉनसेंस है। हीलियम एक न्यूट्रल नॉन पोलर एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी कोई भी कंपाउंड में आप देखो कमी है, और ऑक्सीजन में तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है। तो दिस इज इनकरेक्ट। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सिंपल 4। So again, this was a question, factual question from the P block elements, and it is from the, sorry, block S block elements. Some tranquilizers are listed below. Now, this is a question from chemistry in everyday life, which we always say is quite important because last 2-3 साल से chemistry in everyday life JEE में, नीट में काफी हद तक पूछने लगे हैं। मतलब नीट में तो एक क्वेश्चन आता है, और जेई के कुछ कुछ sessions में the number of questions from chemistry in everyday life has been ranging from 2 to 3 questions in a particular session. So obviously you have to take this chapter seriously. So tranquilizers are listed below. Which one from the following belongs to barbiturates? Barbiturates यानी derivatives of barbituric acid. इसमें veronal, seconal, luminal ये सब आता है. Answer is clearly option 1. Next, which of the following statements are not correct? हाइड्रोजन चैप्टर से फैक्चुअल स्टेटमेंट्स लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, और ये हम करते हैं। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। यस, हाइड्रोजन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो मेटल के ऑक्साइड्स, हेवी मेटल ऑक्साइड्स में लेट्स से वी हैव कॉपर का ऑक्साइड, then hydrogen can get oxidized to form water, and metal oxides metal में reduce हो सकते हैं। Absolutely correct statement है। Heavy water, which is D2O, is used to study mechanism.
रिएक्शन मैकेनिज्म में D as the heavy element of the water could be used, और इसको ट्रेसर्स टेक्निक बोलते हैं। तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म में हम यूज भी करते हैं, करेक्ट है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स। ऑफ कोर्स, सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स मतलब ऑयल जो होता है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स मीनिंग अनसैचुरेशन होता है, और हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर नथिंग बट फैट्स। तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। HH bond dissociation enthalpy is lowest as compared to a single bond between two atoms of any element. एब्सोल्युटली बकवास। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने का एंथैल्पी हाईएस्ट होता है, लोवेस्ट नहीं। ये इनकरेक्ट है। हाइड्रोजन reduces oxides of metals that are more active than iron. आयन से एक्टिव मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स। Now, if you look at the electrochemical series, then with respect to SHE, जो एक्टिव मेटल्स है वो नीचे है, जो लेस एक्टिव मेटल्स है वो ऊपर है। And with the rule of lower reducing upper, lower reduces upper, हाइड्रोजन अपने ऊपर के लेस एक्टिव मेटल्स को रिड्यूस कर सकता है, ना कि ज्यादा एक्टिव मेटल्स को। और आयन से ज्यादा एक्टिव मतलब सारे नीचे वाले मेटल्स। तो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सो द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट में आंसर आपका है डी एंड ई। रिमेंबर, नॉट करेक्ट पूछा है, सो डी एंड ई आर नॉट करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन 4। Next, for a certain reaction, the rate of the reaction is given as K into A square and B. The first observation है, it's a third order reaction, second order in A and first order in B. Question है, when the initial concentration of A is tripled, keeping the concentration of B constant, initial rate would be। अगर A को ट्रिपल कर रहे हैं B कांस्टेंट रख के, तो 3 स्क्वायर 9 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा, increases by a factor of 9। Answer is option 4। Simple chemical kinetics का question। Which one is an example of heterogeneous catalysis? Surface chemistry का question। Combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia in the presence of finely divided ion। यही आंसर है यार। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives you ammonia। 2 मोल्स अमोनिया मिलता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया सारे गैसियस स्टेट में है, लेकिन आयन सॉलिड स्टेट में है। When the reactants and the catalyst are not in the same state, it's called as heterogeneous catalysis। Answer is option 1। Okay, coming to 67th, a fact-based question from S block elements. Which one of the following statements is correct? Magnesium plays role in neuromuscular function and interneuronal transmission। So in biological importance of calcium and magnesium, ये सारे statements दिए हैं, and this is incorrect because it's not magnesium but calcium which plays role in neuromuscular function and interneuronal transmission। Daily requirement of magnesium and calcium in the human body is estimated to be zero point 0.2 to zero point 0.3 gram। Yes, NCERT में 200 to 300 milligram दिया है, which is equivalent to 0.2 to zero point 0.3 gram। This is absolutely correct statement। All enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require calcium as a cofactor, नहीं magnesium। तो ये incorrect है। Bone in human body is an inert and unchanging substance। Obviously wrong, inert नहीं होता है, bones में calcium रहता है, which has a tendency to react। Next, weight of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। This is a very simple question from hydrocarbons, alkanes के topic से, जहाँ पर sodium salt of acid when reacted with sodium hydroxide in the presence of quicklime gives you an alkane with the elimination of sodium carbonate, a famous decarboxylation reaction।
तो इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में जो अल्केन बनता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो यहाँ पर बोला है सोडियम इथेनोएट मीनिंग R इज इक्वल टू CH3। तो यहाँ पर बनेगा CH3H मतलब मीथेन। अब बोला है कि प्रोडक्ट का 2 मोल्स का वेट कितना होगा। तो 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 16 ग्राम। 2 मोल्स ऑफ मीथेन विल बी इक्वल टू 32 ग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन अल्केन्स के टॉपिक से। Element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is. तो सोडियम नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन obtain करने के लिए Na प्लस बनाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा, क्लोरीन फ्लोराइड बनाएगा, नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाएगा। Now, among the ions, we know that cations are smaller than the anions, and if they are isoelectronic, then ये तो डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो। इनफैक्ट ये सारे नियॉन कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाएंगे। And among the isoelectronic species, the negatively charged anions with a high negative charge is largest, and the cation with a high negative charge is the smallest. मतलब ये पूरा सीक्वेंस अगर मैं बताऊं तो कार्बाइड रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ साइज, फॉलोड बाय नाइट्राइड, उसके बाद ऑक्साइड, उसके बाद क्लोराइड, देन कम्स सोडियम और मैग्नीशियम एंड अल्यूमिनियम। इसमें ऑप्शन में नाइट्राइड है, क्लोराइड है, सोडियम है और ऑक्साइड है। आंसर क्लियर है, ऑप्शन 4। So this question you can directly relate with respect to the periodic table, atomic and ionic radii periodic property के रिलेशन में सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग से मॉड के रिलेटेड क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, सिर्फ सीक्वेंस पूछा है। नाउ इसमें एक शॉर्टकट है कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है जिसमें पाई और पाई स्टार साथ में आते हैं। पाई पाई स्टार साथ में, तो अगर पाई और पाई स्टार वाला सीक्वेंस साथ में है तो वो ऑक्सीजन फ्लोरीन का होगा, ना कि नाइट्रोजन का। तो सेकेंड ऑप्शन में ये साथ में नहीं है, थर्ड में भी साथ में है और फोर्थ में भी साथ में है। अरे वाह, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि पाई पाई स्टार साथ में नहीं होता है, तो आंसर सीधा ऑप्शन 2, क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग सीक्वेंस रिलेटेड, वेरी सिंपल। Homoleptic complex from the following complexes is from the chapter coordination compound। बहुत सिंपल क्वेश्चन। होमोलैप्टिक मतलब जिसमें सारे लिगेंड सेम होने चाहिए। हम नाम से रिलेट करो तो भी आंसर आ जाएगा। ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसमें एमाइन भी है और एक्वा भी है, तो ये तो हेट्रोलैप्टिक हो गया। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो अल्यूमिनेट, ऑक्जेलेटो इज द ओनली लिगेंड प्रेजेंट इन दिस, यही होमोलैप्टिक है, यही आपका आंसर है। बाकी अगर ऑप्शन देखोगे तो इसमें डाई एमाइन, क्लोरिडो और नाइट्रेटो 3 लिगेंड्स हैं, मतलब हेट्रोलैप्टिक। पेंटा एमाइन, कार्बोनेटो, ये 2 है, मतलब ये भी हेट्रोलैप्टिक है। तो एक ही होमोलैप्टिक है, विच इज ऑप्शन 2। अगेन सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 72 स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। Intermolecular forces are forces of attraction and repulsion between interacting particles that will include dipole-dipole forces, dipole-induced dipole forces, hydrogen bonding, covalent bonding, dispersion forces. Choose the most appropriate answer from the options given below। कौन से करेक्ट फोर्सेस है? सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग छोड़ के सारे ही इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं। सो द आंसर इज ए बी सी ई आर करेक्ट। 4। 73 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाइरिडीन। सिर्फ पाइरिडीन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, एंड दैट इज ऑब्वियसली नोन। So pyridine is a benzene-like structure with a heteroatom nitrogen, and the 5 carbons are bonded with hydrogen। तो famous molecular formula भी है C5H5 और N। तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स तो आपके रिंग में है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स हाइड्रोजन के हैं,
तो सिग्मा हो गए टोटल 11, 11 सिग्मा बॉन्ड्स। पाई तो दिख रहे हैं आपको सामने ही, 3 है, और एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन के ऊपर। एंड द आंसर फॉर द सीक्वेंस ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर शुड बी 11, 3, 1 respectively, option 4. Next, select the correct statements from the following. Atoms of all elements are composed of two fundamental particles? No. तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 power minus 31 kilogram. Absolutely correct. All the isotopes of a given element show same chemical properties? Yes, isotopes are the elements having the same atomic number but different atomic mass number. तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन मास विल बी डिफरेंट। मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स? नो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर? यस, डाल्टन ने ही तो एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि ये एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बाद में डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के हिसाब से द चेंजेस केम। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, यस इट इज करेक्ट। एंड द आंसर इज ऑप्शन 1, इट इज बी, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक का, अगेन अल्डिहाइड कीटोन्स का। If you observe, aldehyde ketones had a good weightage in this particular paper. Identify product A in the following reaction. So, ऑर्गेनिक में मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले ना फंक्शनल ग्रुप को देख लो। तो दिस इज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, and there is a reaction with zinc amalgam concentrated HCl, famously named reaction का reagent है, and this is Clemenson's reduction. और क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स अ कीटो ग्रुप इनटू मिथाइलिन। So if you have a keto, it gets converted into CH2. One more thing, they have given twice of H2O. So with zinc amalgam and concentrated HCl, एक कीटो ग्रुप में एक ऑक्सीजन यानी एक वाटर निकलता है। अब यहाँ पर दो वाटर दिया है, मतलब देयर इज रिडक्शन ऑफ बोथ द कीटो ग्रुप। इनडायरेक्टली हिंट है, रिडक्शन ऑफ बोथ कीटो ग्रुप। तो अब रिडक्शन करके अगर देखें तो ये वाला पार्ट अगर CH2 में कन्वर्ट हुआ और ये CH3 है तो दिस इज योर इथाइल। सिमिलरली ये CH2 में कन्वर्ट हुआ, ये भी CH3 है तो ये भी इथाइल हो गया। मतलब दोनों तरफ आपको इथाइल और इथाइल ग्रुप देखना है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, assertion reason. In equation, delta G of reaction equal to minus NFE cell, value of delta G depends on N. अब डेल्टा जी, एफ तो कांस्टेंट है, तो एन और ई दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, बिकॉज ई सेल इज द नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ, और नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ तो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ये नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ चेंज होगा, एन का वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अगर चेंज ना भी करे तो डेल्टा जी तो चेंज होगा। मतलब कोई भी इक्वेशन, मतलब गिब्स एनर्जी इक्वेशन में माइनस एनएफई में डेल्टा जी का डिपेंडेंसी एन और ई सेल दोनों पे होना चाहिए। Had it been delta G not equal to minus NF E naught of the cell, तो E naught कांस्टेंट है, F भी कांस्टेंट है, उस केस में अगर ये स्टेटमेंट होता, यस देन इट वुड बी करेक्ट। मतलब असर्शन तो फॉल्स हो गया। ठीक है ना, ऑब्जर्व करोगे तो असर्शन फॉल्स है, मतलब आपका एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है, बिकॉज 2, 3, 4 यानी असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चंस में यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है और पहला वाला ट्रू है। फॉल्स वाला अगर आपने फाइंड कर लिया तो रीजन ऑब्वियसली ट्रू होना चाहिए। लेट्स चेक इट। E cell is an intensive property and delta G is an extensive property. Of course,
ई सेल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और डेल्टा जी जो एनर्जी है वो मास या फिर अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Next, one more question from states of matter. Which amongst the following option is correct graphical representation of Boyle's law? सबसे पहले basic Boyle's law क्या है? Boyle's law states that pressure is inversely proportional to volume at a constant temperature, meaning the product of pressure and volume is constant. So if you plot pressure versus volume, then you will get a rectangular hyperbola because inverse है। लेकिन अगर आप प्रेशर को 1/v ओवरऑल से प्लॉट करते हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। अगर ग्राफ्स को देखो तो पहला ग्राफ प्रेशर टेम्परेचर का, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देन प्रेशर एंड वॉल्यूम का है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ओके। बट यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का कंपैरिजन। इसमें एक सिंपल ट्रिक है, यू जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, एंड ये वाला जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये T3 के रिलेटेड V3 देगा, ये T2 के रिलेटेड V2 देगा, और ये T1 के रिलेटेड V1 देगा। तो इफ आई कीप द प्रेशर टू बी कांस्टेंट, देन हल्सला बोलता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर T3 मैक्सिमम है तो V3 भी मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि ग्राफ के अकॉर्डिंग है नहीं बिकॉज V3 तो मिनिमम है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड में प्रेशर एंड 1/v, जैसे मैंने बोला प्रेशर एंड 1/v डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ ओके है। अब यहाँ पर वापस एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द 1/v एक्सिस, और यहाँ से मैं इसको रिलेट करूँ तो ये T3 है तो ये 1/v3 आएगा, ये T2 है तो 1/v2 आएगा, और ये T1 है तो 1/v1। Now, if T3 is maximum and pressure is constant, V3 should be maximum, but the reciprocal of V3 should be minimum. चेक करते हैं हमारा 1/v3 मिनिमम पे है क्या? हाँ है, यानी 1/v3 मिनिमम और 1/v1 मैक्सिमम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो सिंपल ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैस लॉस के रिलेटेड। 78, the relation between Nm, which is the number of permissible values of magnetic quantum number m, or a given value of azimuthal quantum number L is. So, अगर मेरा azimuthal quantum number L है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है -L टू +L इंक्लूडिंग 0। -L टू +L के हिसाब से 2L वैल्यूज ले सकता है, और 0 इंक्लूड किया तो +1। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज इज 2L + 1। अब 2L + 1 जैसा डायरेक्ट रिलेशन तो दिया नहीं है, बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो आई कैन जस्ट राइट दिस एज Nm -1/2 इक्वल्स टू L, विच इज इन ऑप्शन नंबर 2। आप इसको रिलेट करोगे तो वो ही इक्वेशन बनेगा। So this is a simple question from the atomic structure related to the quantum numbers. Next, electrochemistry का एक और क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलार। सेंटीमोलार का मतलब होता है 0.01 मोलार। Solution of KCl at 25 degrees Celsius is 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट को हमेशा चेक करना चाहिए, सीमेंस पर सेंटीमीटर है ये। The resistance of the cell containing the solution at the same temperature is 60 ohm. The value of cell constant is, तो cell constant होता है B, and इसका एक famous equation है B equal to KR, जिसको मैं बेकार बोलता हूँ, B equal to KR। तो cell constant को find करने के लिए just multiply A, which is 2.1 into 10 power -2 and 60। ये जाएगा 10 raised to -1
ये देगा आपको 6, 12 एंड 1.26 पर सेंटीमीटर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। बेकार फॉर्मूला से अच्छा क्वेश्चन। 80, ऑर्गेनिक का अल्कोहल के चैप्टर से एक मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। You have a secondary alcohol reacted with HBr and you have to find the product. मैकेनिज्म क्या बोलता है कि OH एक पूरा सा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन में इट विल फॉर्म अ कार्बोकैटायन। एंड रिमेंबर माय फेमस स्टेटमेंट, the moment you see a carbocation think about the rearrangement। तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है एंड इट विल रीअरेंज बाय अंडरगोइंग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और ये हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाएगा, विच इज CH3C CH3 CH2 plus and CH3। Next step, it will be attacked by bromide and you'll get a tertiary bromide, which is in the option 2। आपको सिर्फ स्ट्राइक होना चाहिए था, प्रोटोनेशन, कार्बोकैटायन एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सिंपल mechanism related to the alcohol and HBr reaction। Which among the following molecules on polymerization produces neoprene? So neoprene is the monomer, sorry, neoprene is the polymer and it is having a monomer of chloroprene। Chloroprene matlab butadiene branched with a chloro, which is option 3। Direct question from polymers, very simple question। Among the following, the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell is। So ammonia में you have N with H3 and a lone pair, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। AlCl3 में aluminium has only 3 chlorine bonded, it is having only 6 electrons। तो डेफिनेटली अपने को पता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। बेरिलियम क्लोराइड भी एक गरीब मॉलिक्यूल है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। PCl4 is electron precise, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल। एंड PCl5 is expanded octet because 5 बॉन्ड के साथ this has 10 electrons। तो not having 8 electrons वाले हैं 1, 2 और 3। So the answer is 3। Now this is the question from chemical bonding related to the incomplete octet and expanded octet molecules। Amongst the given options, which of the following molecules or ion acts as a Lewis acid? Lewis acid मतलब इलेक्ट्रॉन deficient, यानी गरीब मॉलिक्यूल। अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल वाला। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। ऑब्वियसली एक और गरीब मॉलिक्यूल है BF3। तो question back to back with the same concept, not expected, Neet and TA। 84, assertion reason वाला एक और क्वेश्चन थी। assertion reason वाले क्वेश्चन काफी थे, लेकिन if you know your concepts properly, if you know the facts properly, क्वेश्चन क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है। they were quite simple questions। Metallic sodium dissolves in liquid ammonia, giving a deep blue solution which is paramagnetic, a famous concept from the S block elements। कि जब सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वी से लेट्स से x plus y moles of ammonia, then it forms the ammoniated cation and ammoniated electrons। मतलब NaNH3 X with a plus charge, यह है ammoniated cation, and ENH3Y with a minus। ठीक है। So sodium when dissolved in liquid ammonia gives a deep blue solution because of the ammoniated electron, and because of this only it is paramagnetic। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अमोनिया के साथ सॉल्वेट हो जाता है। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट असर्शन है। एंड डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। नो, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये गलत है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर है 4।
Which of the following reaction will not give primary amine as product? Question from organic nitrogen chapter amine से. First है amide with LiLH4 on hydrolysis. So this is reduction of amide. As I say, amide जब reduce होता है, it gives you a primary amine. तो ये तो primary amine देता है LiLH4 के साथ. तो ये not give primary amine का question है, तो ये तो दे रहा है. Then you have amide with Br2KOH giving you product. Now, this is your famous happy birthday reaction of men's bromamide degradation. शॉर्टकट क्या बोलता है? CO उड़ाओ और डायरेक्टली अटैच करो, यहाँ पे मिलेगा आपको प्राइमरी अमाइन. तो ये भी प्राइमरी अमाइन दे रहा है. साइनाइड का रिडक्शन विद LiLH4 गिव्स यू अ प्राइमरी अमाइन. मेंडियस रिडक्शन है ये. नेम्ड रिएक्शंस के ऊपर काफी फोकस किया है इस साल के नीट पेपर में. So this also gives you a primary amine, and NC isocyanide का reduction gives you a secondary amine CH3NHCH3. तो ये आपको primary amine नहीं देता है, मतलब यही आपका आंसर है, because the question asks not give you a primary amine. Section B की तरफ चलते हैं. Question number 86. Which of the following statements are incorrect? All the transition metals except scandium form MO oxides which are ionic. सारे transition metals except scandium MO यानी +2 oxidation state में oxides बनाते हैं. Yes, because scandium can exist only in +3 oxidation state with a 3D0 configuration. मतलब ये statement correct है, आपको incorrect पूछा है. Highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxides is attained in SC2O3 to Mn2O7. Absolutely correct. Mn can have its maximum oxidation state of +7 और scandium अपने ग्रुप के हिसाब से +3 oxidation state attain कर सकता है. That's the correct statement. Basic character increases from V2O3 यानी +3, V2O4 +4, V2O5 +5. Now, general saying है कि lower oxidation state वाले oxides basic होते हैं, middle amphoteric होते हैं और higher वाले acidic होते हैं. Basic character increase नहीं होता है, decrease होता है. मतलब ये incorrect statement है. V2O4 dissolves in acid to give VO4 3 negative salts. इसका एक सिंपल लॉजिक है. V2O4 +4 में है, एसिड में डिसॉल्व करने के बाद +5 वाला सॉल्ट कैसे दे सकता है? तो ये गलत स्टेटमेंट है. आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट टैली करना है. यू डोंट रिक्वायर टू नो द रिएक्शंस. CRO is basic, Cr2O3 is amphoteric. Yes, लोअर वाला बेसिक होता है, बीच वाला एम्फोटेरिक होता है, बड़ा वाला ऑक्साइड एसिडिक होता है. अभी बताया, मतलब ये करेक्ट है. तो इनकरेक्ट पूछा था, तो सी और डी इनकरेक्ट है. तो आंसर इज ऑप्शन 4. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स. यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को काफी अच्छे से कवर किया है इस साल के पेपर में. Next, again coming from organic, and this comes from ethers part of alcohols, phenols, ether. तो अल्कोहल के दो क्वेश्चंस आ गए हैं. You have an ether reacted with HI and there is a heat. तो famously बेंजीन पे जब ऑक्सीजन रहता है तो ये वाला बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटेगा despite of heat being given, because this carbon oxygen bond is having a double bond character due to resonance and it's a very strong bond which is not possible to be broken down. तो ऐसे केस में जब आप HI कोल्ड यूज करो या हॉट यूज करो, आंसर आपका सेम आता है. ये बताया हुआ है. ठीक है. सो ओनली दिस बेंजाइल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक. दिस विल फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायन. तो I इधर जाएगा, H इधर जाएगा. It will form benzyl का iodide and always phenol in this type of structure. So the answer is option 4. 88. थर्मोडाइनामिक्स का अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. Which amongst the following option is the correct relation between the enthalpy change and internal energy change? Famously, we know delta H is equal to delta U plus delta NGRT. बोनस है यार ये तो. Answer is option 3. 89.
सॉलिड स्टेट से एक और क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज centered octahedral void lies in one unit cell of FCC. So OVs are present at H center and body center. H center पे and body center. So this is known. And her H center पे OVs will have a contribution 1/4. वही पूछा है कितना फ्रैक्शन OV का, सॉरी, हाँ, कितना फ्रैक्शन OV का H सेंटर पे होगा? आंसर इज 1/4. दैट्स व्हाई वी से नंबर ऑफ OVs इन FCC इज, H सेंटर होते हैं 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर होता है 1, कंट्रीब्यूशन पूरा, एंड बिकम्स 3 + 1 = 4. एंड सिंस FCC में भी 4 एटम है, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर n एटम्स है FCC के तो उसके OVs भी n होते हैं. दैट्स हाउ वी प्रूव the number of OVs are same as the number of atoms in a cell of FCC. Solid state का simple question. Statement based question. The nutrient deficient water bodies lead to eutrophication. तो न्यूट्रन डेफिशिएंट नहीं होता है, न्यूट्रेंट रिच होता है. और इसी न्यूट्रन रिच वाटर बॉडीज की वजह से बहुत सारा ऑक्सीजन ये अपनी तरफ खींच लेता है, एंड ड्यू टू विच डिक्रीजेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन. तो ये न्यूट्रन डेफिशिएंट वाटर बॉडीज के रिलेटेड नहीं है, न्यूट्रन रिच. ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया. And eutrophication leads to decrease in the level of oxygen. Yes, because in nutrient-rich water bodies तो ऑक्सीजन खींच लेगा अपनी तरफ तो लेवल कम कर देगा. मतलब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है. आंसर इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट, which amongst the following will be most readily dehydrated under acidic condition? अल्कोहल का डायरेक्ट मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन. Dehydration of alcohol acidic condition में follows even mechanism, and even का reactivity depends on stability of carbocation. This question में you have to just check the carbocation stability. So here you'll get a secondary carbocation. Here you are getting a tertiary sorry, H है ना, तो secondary carbocation ही मिलेगा. यहाँ पर भी आपको secondary carbocation और यहाँ पर भी secondary. So all are giving you secondary carbocation. तो फर्क आपको सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर देखना है. अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट NO2 है, NO2 -R और -I इफेक्ट. -R तो यहाँ नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EWG इफेक्ट शो करेगा. -I क्या करता है? कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है. तो जहां जहां नाइट्रो वहां कार्बोकेटाइन डीस्टेबलाइज होगा. और अगर कोई पॉजिटिव वाला ग्रुप है, यानी जो कम विड्रॉइंग है या फिर EDG वाला ग्रुप है, वो स्टेबल करेगा. तो 3 में नाइट्रो है, वो तीनों रूल्ड आउट है. आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन 3. अल्कोहल का अगेन वन मोर क्वेश्चन. अल्कोहल से ओवरऑल 2 अल्कोहल के एक ईथर का क्वेश्चन आया. 92 ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 16 के रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑक्सो एसिड्स और बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन. पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज योर मार्शल्स एसिड. एंड पर ऑक्सो से ही समझ जाता है कि इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होना चाहिए. एज आई से पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हैज अ सुस लिंकेज. और सुस तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये सीधा मैच हुआ थर्ड से. और पाइरो बोला तो सॉस लिंकेज होता है, सॉस भी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन 1. तो अगर आपने मैच किया ए को 3 से और सी को 1 से, ए को 3 से सी को 1 से, आंसर तो मिल गया ऑप्शन 3. बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है. बाकी सल्फ्यूरिक एंड सल्फ्यूरस एसिड स्ट्रक्चर्स आर वेल नोन, मैच कर सकते हो बट नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक अल्डिहाइड कीटोन्स का एक और क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन. So, as I say, organic का question function group के focus, ketone and aldehyde. And there is 2 moles of AgNH3 twice plus, which is famously Tolan's reagent. Aldehyde ketones में Tolan सिर्फ aldehydes के साथ react करता है, and aldehyde oxidizes to carboxylic acid. But there are 3 moles of hydroxide, so the acid formed will be
oxidized to the carboxylate ion, or will be neutralized to the carboxylate ion. कीटोन ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, कीटोन ग्रुप इंटैक्ट रहेगा और अल्डिहाइड सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. आंसर इज ऑप्शन 4. Next, again one more question from organic. Again, it's a combination of aldehyde as well as haloalkane. अब तक haloalkane इतना नहीं पूछा था, इसमें combination में पूछा है. तो final sequence road map reaction है. You have an aldehyde with LiLH4, it undergoes reduction. An aldehyde reduces to a primary alcohol, you'll get ethanol. Then ethanol on heating with H2SO4, even mechanism, but यहाँ तो सीधा सीधा ethene बन जाएगा, CH2 double bond CH2. ethene HBr के साथ hydrohalogenation करेगा. Simple addition according to Markovnikov will give you ethyl bromide, and ethyl bromide with bromobenzene sodium triether. This is your word-specific reaction, जो कि अल्काइल बेंजीन्स बनाता है. तो अल्काइल तो आपका इथाइल है और ये बेंजीन पे लग जाएगा, इथाइल बेंजीन प्रोडक्ट बन जाएगा एज पर वर्ड स्पेटिक रिएक्शन. The reaction that does not take place in a blast furnace between 900 to 1500 Kelvin temperature range during extraction of iron. Calcium oxide and silica giving you silicate, ये इस रेंज में करता है. Fe2O3 plus carbon monoxide. No, this doesn't take place in the range 900 to 1500 Kelvin. This is the answer. ये भी reaction FeO plus CO का और carbon plus carbon dioxide का 900 to 1500 Kelvin में करता है. So this is a question from metallurgy related to blast furnace extraction of iron. Pimai stone is an example of surface chemistry का एक और question. पहले heterogeneous catalysis का एक question था. Pimai stone is an example of, Pimai stone is what? Gas in solid, and gas in solid को solid sol बोलते हैं, तो ये solid sol का example है. Simple classification based question. Colloid stone. Which complex is most stable? The stability of complex depends on the type of ligands. अगर आप देखोगे तो सारे ऑप्शन में कोबाल्ट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 में है. दूसरी बात, the ligands are different and the stability अगर ligands के साथ कंपेयर करोगे तो it depends on the chelating ligands first. Chelation कॉम्प्लेक्स को बहुत ज्यादा स्टेबल करता है. तो फर्स्ट में एमाइन लिगेंड है, एमाइन और एक्वा है, एमाइन और नाइट्रिटो है, क्लोरिडो एंड इथिलीन डायमाइन. This is responsible for chelation. So this will have CO bonded with En, and यहाँ पर एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स के हिसाब से chelation होगा, and you will have chloro and chloro. So this is the structure. And यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा. आई एम सॉरी, इन फैक्ट सारे ही स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट सेम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ये +3, ये -2. यहाँ पर भी कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3. तो सिर्फ लिगेंड्स के ऊपर देखना था और किलेशन के हिसाब से आंसर होगा 4. क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा क्वेश्चन है उससे. ऑर्गेनिक हकल्स रूल के ऊपर क्वेश्चन फ्रॉम अरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स. So the number of compounds या species which obey Huckel's rule. First is naphthalene. Of course, it obeys Huckel's rule. Next में this is cyclopentadienyl anion. Famous example हमेशा देते हैं कि conjugation में participate करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 4n+2 को satisfy करेगा, मतलब ये Huckel's rule को follow करेगा. ये एंटी एरोमेटिक है, हकल्स को फॉलो नहीं करता है. ये भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हकल्स को फॉलो नहीं करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स हकल्स फॉलो करेगा. जैसे cyclooctatetraene which will acquire cup shape and become non-planar, of course will not follow Huckel's rule. And this is your famous anthracene which obviously follows Huckel's rule. कितने Huckel's rule को फॉलो कर रहे हैं? 4. आंसर है ऑप्शन 2. The equilibrium
concentration of the species in the reaction given are 2, 3, 10 and 6 mole per liter respectively at 300 Kelvin. Delta G naught for the reaction is, तो डेल्टा जी नॉट पूछा है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी नॉट इज -2.303 RT log of A equilibrium to the base 10. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कंसंट्रेशन से फाइंड करोगे एंड फॉर द गिवन रिएक्शन इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 10, 6, रिएक्टेंट का है 2, 3, ये गया अच्छा 10 और log 10 तो 1 हो जाता है, मतलब ये टर्म तो 1 हो गया. आंसर आपका सीधा -2.303 कैलोरीज में है, हर की वैल्यू दी है 2 into 300. Calculate, you will get the answer as -1381 calories approx. The answer is option 1. Sorry, option 4. So this was a question from the equilibrium. So ionic equilibrium से कोई question नहीं आया, which was not expected because it's a very important and a lengthy chapter. और chemical equilibrium से आया, ionic से नहीं आया. 100 balancing redox से finally एक question on balancing the given redox reaction. So balancing में हमेशा आप ionic reaction लिखो. Cr2O7 2 negative is reacting with sulfate and it gives you twice of chromic and sulfate. So chromium का +6, sulfate का +4, chromium +3, sulfate का +6. तो +6 से +3 डिक्रीज हो रहा है -T का इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2 है, -6 टोटल डिक्रीज. और इंक्रीज है +4 से +6 यानी 2 का और एटम एक ही है यानी 2. अब रिडॉक्स बैलेंस करने के लिए 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो यानी सल्फेट को 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो. नाउ ऑक्सीजन देखोगे तो 7 एंड 9 16 है, में से 12 यहाँ पर गया, 9 and 7 is 16 में से 12 यहाँ पर गया. So the balancing will be on the right with 4H2O. Yes, 4H2O के हिसाब से. And now the charge H plus added will be 8 to balance the hydrogen. मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ज को वेरीफाई कर लो, तो यहाँ पे -2 -6 +8 0 हो रहा है, +3 -6 0. हाँ, +3 into 2 +6 -6 0. दोनों तरफ 0 बैलेंस है, मतलब जो हम कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो ये है 1, 3 and 8. आपको पूछा था A, B और C. It is in the order 1, 3 and 8 respectively. So the answer is 2. So this completes the discussion of NEET 2023 chemistry section. Overall, it was a balanced paper because all the topics were more or less covered and the section wise coverage was also good because physical chemistry 18 questions, organic के 17 questions और inorganic के 15 questions. तो more or less हम हमेशा बोलते हैं कि 16 questions from each section. आपके अगर 48 के हिसाब से देखोगे तो वो एवरेज कवरेज होना ही चाहिए और उस हिसाब से दिस वाज कंप्लीटली बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ कवरिंग ईच सेक्शन के साथ साथ हर टॉपिक को भी उन्होंने कवर किया है and the question ka level was good and it was overall a very moderate paper. Thank you and all the best.